Good morning, student. Again we are back with this same chapter, physical and chemical change, and the next topic is a chemical change that I have to continue today. A change in which composition and a chemical properties of a substance are changed is called a chemical change. In इसमें कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो, बिल्कुल चेंज होता है, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है इस चेंज में. द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू सब्सटेंस आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंसेस. दूसरे जो सब्सटेंस पहले था उस सब्सटेंस के इसके प्रॉपर्टीज़ में बहुत डिफरेंसेस होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है. मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल, और जनरली केमिकल चेंज जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है, जो फिर से वापस उस नए सब्सटेंस जो सब्सटेंस था पहले के सब्सटेंस में फॉर्मेशन नहीं हो पाता है. एग्जाम्पल, व्हेन कार्बन इज बर्न्ड, जब कार्बन जल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड. कार्बन डाइऑक्साइड has property entirely different from those of carbon, so the burning of carbon is a chemical change. Now next topic is a characteristic of a chemical change. During a chemical change, new substance with different chemical properties are formed. Second, chemical changes are permanent. ये permanent होता है, thus it cannot be reversed. इसको हम फिर से वापस नहीं ला सकते by simple physical method. Relatively, a large amount of energy is either absorbed or evolved during a chemical change. ये physical change के just opposite है. Next we will continue, or we will explain with the help of example. First is a rusting of iron. When iron objects are exposed to air, जब हम लोहे को हवा के प्रेजेंस, एयर के प्रेजेंस में, मॉइस्चर के प्रेजेंस में रखेंगे, they are covered with a brown powdery layer called rust. Fe2O3 होता है इसका फार्मूला. The formation of rust on the surface of iron is called rusting of iron. Here, the composition and properties of rust are different from those of iron. Iron से इसका properties different होता है because it is formed by the process of chemical reactions. Rust cannot be converted back into iron by simple physical methods. Now next, prevention of rusting. कैसे हम इसका बचाव कर सकते हैं? For rusting, both water and oxygen should come in contact with iron. If any one of these is prevented to come in contact with iron, rusting can be prevented. So rusting can be prevented using different methods. इसको आयरन को ये दो चीज़ के कॉन्टैक्ट्स में आने से बचाना होता है, या तो ऑक्सीजन या तो फिर मॉइस्चर. अदरवाइज अगर ये दो चीज़ से नहीं बचा, देन द आयरन will start rusting by the chemical reaction between the iron, moisture and oxygen. Now the first is the method that prevent the rusting. First is painting, applying a layer of grease, galvanization, alloying. So student, this is the last topic for today, the chemical change. With the example I will explain it in the next class. I will start from the galvanization. So please don't forget to subscribe and like the channel. That's all. Thank you. Have a nice day everyone.